Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the line by line explanation for the new grammar topic Karak, lesson number 8, class 7 from the book Vyakaran Anand. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friend circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Karak, case. So what is the purpose of this karak? Yes, it tries to connect the noun or pronoun to the action word or to the rest of the words in the sentence. Let's read elaborately. Seema ne pustak padhi. Seema read the book. So who is doing the work here? Seema. So we are able to understand from the sentence who is doing the work by seeing the karak ne. माँ बच्चों को बुला रही है. Mother is calling kids. So who is doing the action? Mother. What she is doing? बुला रही है. Whom she is calling? बच्चों को. So the calling action is happening on the kids here. So the core word makes us to understand that action is happening on the kids. पेड़ से आम नीचे गिरे. पेड़ से, from the tree, the mango has fallen down and the separation of mango has happened from the tree. So from, the word makes us to understand a separation has happened between the two nouns, पेड़ and आम, the tree and mango. बिल्ली दीवार पर बैठी है. The cat is sitting on the wall. We are able to understand the position where the cat is sitting. It is sitting on the wall. पर. So the words which makes us to understand who is doing the work, on whom the action has happened, with which the action has happened, for whom the action has happened, what is the relation between the action word and the noun. And we have a separation that happens between two nouns where the action is happening. So how we are addressing the noun. So this all details is said by karak symbol. These case symbols only will make us to understand how the noun or pronoun is connected to the action word or how they are connected to the rest of the words of the sentence. इन वाक्यों में आए ने, को, से और पर शब्द संख्या तथा क्रिया का आपस में संबंध बता रहे हैं. So this words ने, को, से, पर is giving us the details how the noun and the action word are connected, how they are related. ये चिन्ह कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं. So this is known to be कारक चिन्ह और the अतः so hence we can say संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है. So we can say the pronoun or the noun whose relationship with the other words in the sentence we are able to get to know and the word than karak. That word is said to be karak. कारक को प्रकट करने के लिए संख्या या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं. So symbol that are placed after a noun or pronoun to indicate its case are called pasarg. It's the position which gives the relationship of the noun or the pronoun is connected to the action word or to the rest of the words. पर का अर्थ है बाद. पर मीन्स आफ्टरवर्ड्स. कारक चिन्ह संख्या या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं. द केस सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं. सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कारक. सो दिस एज यू रिमेंबर द टेबल्स इन मैथमेटिक्स यू हैव टू रिमेंबर दिस. कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का, की के, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हरे. This you have to remember. There is no other shortcut. This you have to by heart. As you are by hearting the tables, similarly you have to say this. Close your eyes and keep repeating every day. कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हरे. Let me give the brief of the karak and the symbol that is used against each. Karta karak is a subject who is doing the work. Kriya karne wala who is doing the work. So always for the subject who is doing the work we have to attach ne, and when the ne is coming we will know that the work is done by the subject and it is always in the past tense. Sometimes there is no need of symbol ne. By default we will know. Okay, that I'll show you few examples for that also. Next is कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े, on which the action is
hitting. ஸோ எது மேலே அந்த ஆக்ஷன் போய் விழுதோ அதுதான் கர்ம. ஸோ அதுக்கு என்ன விபக்தி போடணும்? கோ. Sometimes கோ கூட இல்லாமல் we will self understand. I'll give the example when I'm taking in elaborately. Next is current कारक, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, with which the action is happening. So the boy is playing with the ball. So with the ball only the boy is playing. So action is completed with the ball. So the object which is used to do the action we say as current karak, and we have to attach say. Sometimes we attach k dwara also. K dwara na through which the action gets completed. Next is sampradan karak, jiske liye kriya ho, for whom the action is being done. Ke liye ya ko. If I am doing some work for someone, so राम ने सीता के लिए रावण को मारा. So राम வந்து சீதாக்காக தான் ராவணை சாகடிச்சான். So the action of killing Ravana is happened for Sita. So for Sita, for. So संप्रदान कारक for वரும். Okay. So அதுக்கு we have to use के लिए. अपादान कारक, जिससे पृथक होने का भाव हो. So there is a separation between two nouns. So மரத்துல இருந்து கொட்டிச்சு, அந்த ஊர்லேருந்து நான் இங்கே வந்துட்டேன். So this is separation of two nouns. So पृथक is separation. के पृथक दिखाना या अलग होना. Whenever separation happens, we still use say, but it is from, not with. So இங்கே say வந்து with, இங்கே say வந்து from. Okay. So when the separation is happening, we say from. This is also used to compare two things. அவனோட இவன் பெரியவன். So there also will be using apadan se for the comparison also. Next is संबंध कारक, जिससे अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो. We will be able to know how it is related to the other words of the sentence. So का, की, के, रा, री, रे. So का is used for singular masculine, की is used for singular feminine, and के is used for the plural form. அதே மாதிரி தான் मेरा, मेरी, मेरे. मेरा is for the boy singular, मेरी is for the girl singular, मेरे is in the plural form. Next is अधिकरण कारक, क्रिया होने का आधार या स्थान. So we'll be able to know the location or the place of the verb where the action is happening. So may and par, may na in, par na on. May na another in, par na on. So through this word we will know where the action is happening. Next is संबोधन कारक, when you are addressing someone, जिससे संबोधित किया जाए. So you are addressing. So when you are calling someone from far away, hey இங்கே வாயேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, hey hare. So you should put an exclamatory mark here. So that was a brief, the different types of karak and the symbols that is used. कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक, ये 6 भेद तो संख्या या क्रिया के बीच संबंध बताते हैं. So the 6 types of karak will give us the relationship, how the noun and the action words are connected, how they are related. परंतु संबंध कारक तथा संबोधन कारक ऐसा नहीं करते. The संबंध कारक and the संबोधन कारक is not giving the details how the noun or the action word is connected. Instead, संबंध कारक दो संख्याओं के बीच का संबंध बताते हैं. So the संबंध कारक gives how two nouns are connected. संबोधन कारक is used to address the noun, to call the noun. जैसे अजय की गाड़ी खराब है. So here संबंध कारक states अजय order watch is in a repair state. So we are giving the relationship how the two nouns Ajay and Gadi watch is connected and related to each other. यहाँ आया की पसर्क अजय और गड़ी का संबंध बताता है. Gives a relationship how Ajay and Gadi is connected. इसी प्रकार संबोधन कारक भी केवल संख्या पुकारने के लिए किया जाता है. So the संबोधन हे हरे is also used just to call the noun. उनका वाक्य में अन्य शब्दों का कोई संबंध नहीं होता है. It is not related to any other words in the sentence. So just to recollect, कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान and अधिकरण is giving the relationship how the noun and the action words are connected, and संबंध कारक is giving the details how the two nouns are connected, and संबोधन is used to call the noun. So these are the 8 types of karak. Now let's see one by one elaborately. First one is कर्ता कारक, nominative case. कर्ता का अर्थ है काम करने वाला. कर्ता means the person who is doing the work. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं. जैसे so the form of noun or pronoun that indicates that some action is happening, அதை நம்ம கர்த்தா காரக்னு சொல்லுவோம். That is called as
subject, nominative case. See for example, मोहन ने आम खाया, मोहन ate mango, लता ने पौधा लगाया, लता planted a sapling. Did you observe the sentence? It is in the present tense, past tense or future tense. Both the sentences are in the past tense. The work is done already, right? Now we have to ask the question to the verb. What is the verb? Khaya, lagaya. So always in Hindi, the verb will be at the end of the sentence. You know, right? So now you have to ask the question. Who did the work? Yaar work pannanga? Because karta karak is who is doing the work, right? As per definition, the person who is doing the work, we say that to be the karta karak. So who is doing the work? Who ate mango? Mohan. Who planted the sapling? Lata. So I am getting a noun here, Mohan and Lata. We saw in the definition and the symbol pasargna, after the noun you have to attach the symbol. So after the noun you have to attach the symbol ne. So karta karak kenna symbol ne. And if you observe, this gets attached to the past tense, not to the present tense or future tense. यहाँ आम खाने की क्रिया मोहन ने की. So here the action of eating the mango has been done by Mohan. और पौधा लगाने की क्रिया, the action of planting a sapling is done by Lata. अतः मोहन ने, so you have to attach ne to that noun, and लता ने, लता का परमा you have to attach ne. कर्ता कारक वे किनो. कभी कभी कर्ता कारक वाले शब्दों में ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता. In some sentences, though there is a karta is there, ne vibhakti chin, the symbol ne is not attached. Let's see few example. बच्चा सो रहा है, the kid is sleeping. सो रहा है is the action word here. So when I'm asking the question, क्या सो रहा है? Did I get any object? I didn't get any object. There is no object. So what kind of kriya it is? Akarmak kriya. So akarmak kriya va irunda, I don't have to put ne. This is the rule. So I know who is doing the work, bachcha, but I don't have to attach ne next to the noun or pronoun. So bachcha ne abdin poda thevilla because it is an akarma kriya, and moreover this is a present tense. For present tense you don't have to put ne. Next one, गाय घास खा रही है. So the cow is grazing or eating the grass. Who is eating the grass? Guy. Is the sentence is present tense and past tense or future tense? It is in present continuous. So for the present continuous you don't have to put ne. Though I am getting an object here, क्या खा रही है? I am asking a question. What it is eating? I am getting an object here. This is a sakarma kriya, right? But this is a present continuous, so you don't have to put ne poda thevilla. It is self understood who is doing the work. गाय ने घास खा रही है, you should not put. So ne will get attached only to the past tense, not to the present tense or to the future tense or present continuous. Even though it is a sakarma kriya. This rule you have to remember. You have to understand that the karak symbol ne for the karta is attached next to the noun. You have to read the sentence, ask the question to the verb who is doing the work. If you are getting the subject, next to the subject you have to put ne, the first point. Next you have to ask the question to the action word, what. If you are getting some object, then it is sakarma kriya. If you are not getting any object, it is akarma kriya. So akarma kriya ke you don't have to put ne. Sakarma kriya ke you always have to put the ne. Ne will be attached only for the past tense, not for the present tense or future tense, even though it is sakarma kriya. वर्तमान काल भविष्यत काल இதோட யூசேஜ் இருக்காது, நேயோட யூசேஜ் இருக்காது. லைக் रमा खाना पकाती है, रमा is making the food. सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, सुरेश will read the book. Who will read the book? Suresh will read the book. Who is cooking the food? Rama. But I don't have to attach ne in the vartaman and bhavishyat kal. What you have to understand in karta karak, the symbol is ne which gets attached next to the noun who is doing the work. So you have to ask the question to the verb who is doing. எந்த noun வருதோ அந்த நவுனுக்கு பக்கத்தில் you have to attach ne, and ne will get attached only for the past tense which has sakarma kriya. akarma kriyaக்கு நீங்கள் ne attach பண்ண தேவையில்லை, and present tense and future tense sentence இருந்தால் ne attach பண்ண தேவையில்லை even though if it is sakarmak. So this is the rule which you have to remember for karta karak. So next one is karam karak, objective case. क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं.
the person or the thing on which the result of the action is put on. அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம கரம் காரக்னு சொல்லுவோம். ஸோ த ஆக்ஷன் யார் மேலே போய் விழுதோ அதுதான் கரம் காரக். See the example here. மானே गाय को नहलाया. Mother has bathed the cow. So नहलाया is the action. Now I am asking the question, who did the work? I am getting ma. So I am getting mother ne. So that is a karta karak. Now I am asking the question again to the verb on which the action has happened. யாரை குளிக்க வச்சாங்க? Whom? I am asking whom. So गाय को. So on whom the action has happened? On the cow. So cowக்கு பக்கத்தில் you have to attach ko. This is the symbol for karam karakக்கு ko attach பண்ணும். So after the noun you have to attach. So गाय को. And I am asking the question to the verb on whom the action has happened. If I am getting an object, then it is a karam karak. So you have to ask the question accordingly. Karta karakku who? சகர்ம கிரியாக்கு அகர்ம கிரியாக்கு எப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்கணும். கர்மக்காரக்கு யார் மேலே ஆக்ஷன் விழுந்தது அப்படின்றது கேட்கணும். ஸோ லெட் மீ கிவ் யூ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். குமார் ने गड़ों को रंगा. रंगा is coloring. So he is doing the action of coloring. So who is doing the action? யார் கலர் பண்ணிட்டு இருக்கா? कौन कर रहा है? So I am getting Kumahar, the potter. So the potter painted the pots. This is a past tense. ரங்கானா அவன் பாட்டில் கலர் அடிச்சிட்டான். On which he is coloring. எது மேலே அவன் கலர் அடிச்சிட்ருக்கான்? On which the action is happening? gadon ko. So the action of coloring is happening on the pot. So on the potன்ற ஒரு நவுனுக்கு பக்கத்தில் you have to attach ko symbol on which the action is happening. Kumhar ne gadon ko ranga. You are framing a sentence. You have to ask all these questions to use the correct case. So சப்ஜெக்டாக இருந்தால் நே போடணும். எது மேலே ஆக்ஷன் போய் விழுதோ அதுக்கு को வைக்கணும். यहाँ नहलाने की क्रियाफल गाय पर पड़ा और रंगने की क्रियाफल गड़ों पर पड़ा. Here the effect of bathing fell on cow and the effect of the action of coloring fell on pots. Right? So the end result of the action happened on the cow and the pot. इनमें करम कारक है. सो इधर என்ன कारक இருக்கு? करम कारक. And what is the symbol for the करम कारक? को. So where you have to attach the symbol? Next to the noun. So next to the noun only you have to attach the symbol. அதனால गाय को गड़ों को அப்படின்றது எழுதணும். कभी कभी वाक्य में दो कर्म में होते हैं. So in the sentence there will be two objects. माली ने पौधों को पानी दिया. So माली has given the water to the plants. So diya is the action. I am asking the first question, who gave? I am getting Mali gave. So this is the karta karak. So you are attaching ne to that person. Now the second question goes to the verb. What? Enna kudutha? Water. Yarku kudutha? Plants. So I am getting two karma here, two objects on which the action is happening. Paudon ko and pani. These are the two objects I am getting on which the action, end result of the action happened, right? So இங்கே ரெண்டு கர்ம இருக்கு, பௌதம் and பானி. ஏன் நான் வந்து பௌதோக்கு கோ போட்டிருக்கேன், பானிக்கு போடலை? Because there is a rule for a living being you have to attach ko for sure. For non-livingக்கு attach பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. This is not given in your book but this will help you to understand easily. So ko பசர்க்கு வந்து living beingக்கு போடணும், non living beingக்கு போடக்கூடாது. This you have to remember. So பௌதம் is a living being, so you have to attach ko. பானி is a non living, so ko தேவைப்படாது. This rule you have to remember. It is not given in the book. Please note it. Then only you will understand the sentence better. कभी को पसर के बिना प्रयोग किए ही कर्म हो जाता. So see. So some sentences को use பண்ணாமே sentence formation நடந்துரும். जैसे मोहन ने पत्र लिखा. So the action of writing happened on letter. But letter is a non-living thing. So को போட தேவையில்லை. Who did the work? Mohan. So I am attaching karta karak ne. Now next question I am asking what? To the action word. So I am getting an object here on which the action has happened. But இங்கே வந்து it's a non-living thing. So मोहन ने पत्र को लिखा அப்படின்னு எழுத தேவையில்லை. यहाँ पत्र कर्म कारक है किंतु इस वाक्य में को पसर्ग का प्रयोग नहीं है. यूज़ பண்ணல को. ஏன் யூஸ் பண்ணல? ஏன்னா அது non living thing. Understood?
And if you see, this is a past tense, so ne is attached, and this is a sakarma kriya. So action is happening on an object is there, so this is sakarma kriya, adnale ne use pannirukanga. Whenever you're reading another sentences from your textbook, you should correlate all those things, then only you can frame a sentence without any grammatical error. Next is karan karak, instrumental case. संख्या के जिस रूप से क्रिया का साधन या उपकरण का बोध हो, the form of the noun which indicates the tool of the action through which, with the help of which the action has been completed. So क्रियाओட சாதனம் என்ன அப்படின்றது தெரியறது தான் நம்ம करण कारक, with which the action has been performed. अर्थात जिससे क्रिया की जाए, यदि वच्ची through which the action is performed, उसे करण कारक कहा जाता है. ஸோ நான் இப்போ பென்னை வச்சு எழுதுகிற ஆக்ஷன் எதை வச்சு செய்கிறேன்? பென். ஸோ பென், வித் த பென் ஒன்லி ஐ எம் டூயிங் தட் ஆக்ஷன், ஸோ தட் இஸ் என் கரண் காரக். அப்போது கலம் சே ஹேஸ் டு பி அட்டாச்ட் வித் த நவுன். நவுன் என்னது? பென். ஸோ த கரண் காரக்கு என்ன சிம்பிள்? சே. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल. सुनैना गुड़िया से खेल रही है. सो खेल रही है, விளையாடிட்டு இருக்கா. सुनैना is playing with a doll. Ask question, who is playing? So I am getting सुनैना, right? Now खेल रही है, when I am asking the question what, என்ன விளையாடிட்டு இருக்கா, I am not getting any object, and this is a present tense, so ne should not be attached. So सुनैना गुड़िया से खेल रही है. So now next question I am asking, किससे, எதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா? இப்போ கரம் இல்லை, இங்கே கோ தேவைப்படலை எனக்கு. இங்கே தேர்ட் ஒன் வந்து எதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா, with which she is playing. I am getting an object here. Yes, this is the noun I am getting. So next to the noun you have to attach the symbol. So गुड़िया से, किसने, who has done அப்படின்னு கேட்கும்போது you get an object. So past tense இருந்தால் நீ அட்டாச் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் கரம் காரக்கு நீங்கள் கொஷின் கேட்கணும். ஆக்ஷனுக்கு கியா, என்ன சாப்பிட்ட, எது மேலே அந்த ஆக்ஷன் விழுந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது, கிஸ்கோ, யார் அடித்த அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது ஒரு நவுன் ஒரு ப்ரோனவுன் வந்துச்சுன்னா அந்த நவுனுக்கு நெக்ஸ்ட்டில் கோ அட்டாச் பண்ணும். இப்போ தேர்ட் ஒன், எதை வச்சு வேலை பண்ண அப்படின்னு கேட்குறோம். கிஸ்ஸே, வித் விச், யார் கூட. ஸோ அப்போது நம்ம சே அட்டாச் பண்ணோம். சில நேரத்தில் இங்கே கே துவாரா, த்ரூ விச், அது மூலமாக நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கே துவாரா கூட யூஸ் பண்ணுவோம். You have to frame the question for each karak to get the noun, so that you can put the symbol next to the noun. माधव पेंसिल से चित्र बना रहा है. பண்ணிட்டுருக்கா. माधव பண்ணிட்டுருக்கா. So this is a present tense. Who is doing? माधव பண்ணிட்டுருக்கா. What he is doing? चित्र. He is making the picture. So बना रहा है ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு உனக்கு. ஆனால் இது வந்து நான் லிவிங் திங், ஸோ கோ தேவையில்லை. எதை வச்சு பண்ணிட்டுருக்கா? with which, किससे बना रहा है, किससे चित्र बना रहा है, pencil से, with the pencil. So this is the noun, so you have to attach say. Each and every sentence you keep asking from the beginning to understand, so that அந்த சென்டென்ஸில் இருக்க எல்லா விபக்தி சின்னம் உங்களுக்கு வந்துடும், ஞாபகம் வந்துடும். ஏன் இங்கே நே இல்லை, ஏன் இங்கே கோ இல்லை, ஏன் இங்கே சே. இப்போ நம்ம தேர்ட் லெவலில் இருக்கோம், ஸோ மூணுமே நான் சொல்கிறேன். இங்கே ஏன் நே இல்லைன்றதும் சொல்லிட்டேன், ஏன் கோ இல்லைன்றதும் சொல்லிட்டேன், ஏன் சே. புரியுதா? इन वाक्यों में खेलने के साधन, सो द प्लेइंग ऑब्जेक्ट என்னது, गुड़िया, तथा चित्र बनाने का साधन एंड द ड्राइंग का यूज़ करना ऑब्जेक्ट पेंसिल. खेलने तथा चित्र बनाने की क्रिया क्रमशः गुड़िया से तथा पेंसिल से हो रही है, एंड रेस्पेक्टिवली इफ यू सी द एक्शन ऑफ प्लेइंग एंड ड्राइंग आर परफॉर्म विद द डॉल एंड पेंसिल. अतः इनमें करण कारक है, அதனால இங்கே करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस इज देयर. यहाँ से पसर्ग है, सो वी हैव टू अटैच से सिंबल. कभी कभी करण कारक में से पसर्ग के स्थान पर खे द्वारा पसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है. समटाइम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग से वी विल बी यूजिंग खे द्वारा, थ्रू विच. सी हियर एग्जाम्पल. पुल निर्माण मजदूरों के द्वारा किया गया. द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द लेबर्स. थ्रू लेबर्स ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज हैज़ बीन डन. मशीनें के द्वारा वस्त्र बनाए गए. सो द क्लोथ्स वेर मेड by the machines. Through the machines only the clothes is made. So you can use k dwara, through which, by அப்படின்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Let me stop the video here as a part 1 video, and the rest of the case symbol we'll see in the part 2 video. If you have any doubt or clarification, please do put in the comment section. I'll surely reply back. Thank you, students.